because after all they are going to ask you only 2 questions from biotechnology. 2 क्वेश्चन आएंगे आपको, तो मैक्सिमम टाइम इस पार्ट में से ही आते हैं क्वेश्चन. सो next one is nothing but the plant tissue culture. So what do you mean by plant tissue culture? So in that we'll see important points. Plant tissue culture. First you should know what do you mean by totipotency. Totipotency. So it is a capacity of plant cell to develop into whole organism. A single plant cell can develop a whole plant. एक सिंगल प्लांट का सेल ले लिया आपने, रूट का या फिर शूट का या फिर लीफ का. So by using tissue culture you can develop a full plant. Okay, and only plant cell has this property. Okay, so capacity of plant cell to develop into organism by regeneration, and that is known as a totipotency. याद रखो इसको. The concept is very important in case of plant tissue culture. Now we have seen that monoclonal antibodies, that is nothing but the antibodies produced from a combination of your myeloma cells plus a antibodies obtained from animal spleen. So different examples of and monoclonal antibodies. और उसका use क्या है? Monoclonal antibodies and their uses. So first यहाँ पे monoclonal antibody उसका use. Monoclonal antibody उसका. So first one is known as AB6-zimab. F6-zimab. Okay, AB6-zimab. So it is used as an antiplatelet agent. So AB6-zimab is used as an antiplatelet agent. It is a monoclonal antibody. कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किसके लिए यूज करें. एलेमेटोजुमैब. नेक्स्ट वन इज एलेमेटोजुमैब. एलेमेटोजुमैब इज अ बी सेल मतलब बोन मैरो सेल क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया. इट इज यूज्ड इन द ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर्स. एलेमेटोजुमैब. देन नेक्स्ट वन इज जेफ्टिनिबिब. Gefitinib is a tyrosine kinase. It is this antibody or this is a monoclonal antibody used in the treatment of non-small cell cancers. Small cell cancers. So ये gefitinib is used in lung cancer. Next one is a infliximab. Infliximab is used in the rheumatoid arthritis and Crohn's disease. It is a monoclonal antibody used in the rheumatoid arthritis and Crohn's disease. Infliximab. Omalizumab is an anti-hemoglobin E antibody and used for the treatment of asthma. Allergic asthma होता है उसके लिए यूज करते हैं omalizumab. Then rituximab. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. Omalizumab, rituximab. So rituximab is used for the non-Hodgkin's lymphoma and follicular type of lymphoma. ये कैंसर के टाइप होते हैं. Non-Hodgkin's lymphoma and follicular type of lymphoma. So याद रखो rituximab. Then trastuzumab or Herceptin. It is also known as Herceptin. Used in the metastatic breast cancer. Trastuzumab. Breast cancer में इसको यूज करते हैं. Gemtuzumab. So it is also used in the acute myelogenous leukemia. Gemtuzumab. Ibritumonab. Okay. Ibritumonab. So it is used in the non-Hodgkin's lymphoma which is resistant to rituximab. तो rituximab में कोई इफेक्ट नहीं मिला आपको, rituximab यूज करें Hodgkin's lymphoma. So you have to use ibrituximab. Then this muronomab, daclizumab, paclizumab. So muromo, daclizumab, and paclizumab. So they are used for the organ transplantation. तो नया ऑर्गन डाल दिया तो रिजेक्शन होता है, इनकम्पेटिबिलिटी. रिजेक्शन रिएक्शन. तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें रिजेक्शन होने की चांसेस होते हैं. तो उस टू सप्रेस द इम्यूनिटी दिस थ्री आर यूज्ड. म्यूरोमोनैब, डैक्लिजुमैब, पैलीवीजुमैब. इट इज यूज्ड इन द रेस्पिरेटरी सिंसिटियर वायरस. So there are some examples of this just antibody monoclonal antibodies. आपको थोड़ा सा याद रखना है कि rituximab के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Then omalizumab के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. So remember rituximab is used for non-Hodgkin's lymphoma and follicular type of lymphoma. Omalizumab is used as anti-hemoglobin E for the treatment of asthma. एक दो क्वेश्चन आता है. ये तो आपको AB6-zimab में आपको एंटीप्लेटलेट एजेंट होता है वो हो चुका है. टिश्यू कल्चर मीडिया रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर.
क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है एक बार। सो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड विटामिन इन द टिश्यू कल्चर, उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। विल सी व्हाट आर द टिश्यू कल्चर मीडिया रिक्वायरमेंट। वैसे तो बहुत सारा होता है, एक शॉर्ट में मैंने आई हैव ट्राइड टू प्रेजेंट इट। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज इनऑर्गेनिक मिनरल्स, इससे ऑर्गेनिक मैटर लगता है, विटामिन लगता है, अमीनो एसिड लगता है। सो फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक मेटल्स, okay, sorry, inorganic minerals. So for the effective growth of plant or effective growth of plant, which kind of minerals they are required in the medium or growth medium for the tissue culture. उसमें दो आता है, एक आता है micronutrients. First one is the micronutrients like soil, okay, like nitrogen, potash, then nitrogen, potassium, calcium, magnesium, and sulfur. So they are known as a micronutrients. They require in a very less quantity. Now another known as a, well, so sorry, it is a macronutrients. The first one is macronutrients, MA. So macronutrients like nitrogen, potash, potassium, calcium, magnesium, sulfur. They are known as a macronutrients. They require in a larger quantity, and micronutrients they require in a less quantity. Micronutrients like copper, zinc, ferrous, and chloride, then boron, then molybdenum. So these metals they require in a very less quantity. जो ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है उसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। सो जो ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है उसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, एंड जो कम क्वांटिटी में लगता है उसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो ये माइक्रो है, कौन से, कॉपर, जिंक, फेरस, क्लोराइड, बोरॉन, मॉलिब्डेनम। मैक्रो कौन से है, नॉट, माइक्रो में आता है, मैक्रो में आता है नाइट्रोजन, देन पोटेश, देन फिर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये then organic content, source for carbon, okay, source of carbon that is given by, that is obtained from organic content. So source of carbon is a, and source of carbon and energy क्या है, glucose, sucrose, they are most commonly used. Then glycerol, myoinositol, good source of carbon. Peptone, yeast extract, coconut water, tomato juice, malt extract. So all these are used as a source of carbon. Source of carbon. Also agarose. Agarose is also used as a source of carbon. Question इसके ऊपर आया था, the most commonly used vitamin in the tissue culture media. So remember vitamin B1. Thiamine is the most commonly used vitamin for. Vitamin B is the most commonly used in the all plant tissue culture, but other vitamins are also used like nicotinic acid, riboflavin, pyridoxine, ascorbic acid, and cyanocobalamin. They are also used for the growth promotion. Now next one is the amino acids. Which kind of amino acids used in the plant tissue culture media? Commonly used amino acids are the aspartic acid, aspargine, L-aspartic acid, L-aspargine, L-glutamic acid, glutamine, and arginine. These are the amino acids. Now solidifying agent. Question इसके ऊपर भी आ चुका है. Agar is the most commonly used solidifying agent. Question आया था, ऐसा आ चुका है. One of the following is used as a, one of the following agent is most commonly used as a solidifying agent in the टिश्यू कल्चर मीडिया. कौन है, अगार, अगार और अगैरोस, ठीक है, अगैरोस और अगार. तो अगार इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड. आफ्टर दैट जिलेटिन इज आल्सो यूज्ड, लेकिन जिलेटिन हैज अ डिसएडवांटेज दैट इट हैज it will melt at 25 degrees Celsius gelatin. That's why agarose is most commonly used, or agar. Now pH you have to maintain the optimum pH of culture media before sterilization. The optimum temperature should be between, okay, optimum pH should be between 5 to 6 and should be maintained before the sterilization. तो आपने एक बार मीडिया प्रिपरेशन किया तो उसको स्टरलाइज भी करना पड़ता है. Before that you have to maintain the optimum pH, that is a 4 to 6. These are the different tissue culture media requirement. याद रखो उसको. Now again it is a very important point. कम से कम 5-6 बार इसके ऊपर ही क्वेश्चन आ चुका है ये चार्ट के. Different plant growth hormones used in the plant tissue culture और डिफरेंट प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स. ठीक है, तो उसमें आता है ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स, गिबरलिन्स, एब्सिसिक एसिड और एबिसाइजिक एसिड, देन इथिलीन. और भी एक दो आते हैं लेकिन दे आर वेरी लेस इंपॉर्टेंट. जैसे फ्लावरिंग के लिए एक आता है, ठीक है, फ्लावरिंग का एक हार्मोन होता है, सो टू इंड्यूस द फ्लावरिंग. अगर आपके पेड़ को फ्लावर नहीं आ रहे तो वो हार्मोन को स्प्रे करो पेड़ के ऊपर, तो सब पूरा फ्लावरिंग हो जाएगा. सो दीज आर द मेन 4-5 हार्मोन्स. So we'll see one by one. क्वेश्चन इसके ऊपर आता है.
लास्ट ईयर पे क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर GPAT 2022. Now first hormone is known as the auxins. So these hormones they may be natural then synthetic. तो naturally auxin कौन से, natural auxins कौन से? So indole 3 acetic acid, indole 3 acetic acid IAA, indole 3 acetic acid, then indole 3 acetonitride IAN, indole 3 acetonitride IAN, then phenyl acetic acid. Okay, so these three they are known as a natural auxins. Repeat करता हूँ मैं, यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि which one is a natural auxin, which one is a synthetic. So indole 3 acetic acid, indole 3 acetonitride IAA and IAN, then phenyl acetic acid. These are the natural auxin hormones. ये natural मिलते हैं plant. और synthetic कौन से है देखो, indole 3 butyric acid, okay, IBA, naphthalene oxy acetic acid, indole 3 acetic acid, naphthalene oxy, indole 3 butyric acid IBA, indole 3 acetic acid is a natural one, indole 3 butyric acid is a synthetic one. Okay, naphthalene oxy acetic acid NOA. So these are the synthetic. तो ये नेचुरल सिंथेटिक है अपना, उसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है. सो ऑक्सिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूट डेवलपमेंट, रूट डेवलपमेंट एंड सेल डिवीजन. ये भी याद रखो, सेल डिवीजन, रूट डेवलपमेंट एंड सेल डिवीजन. नाउ साइटोकाइनेस, जीपैट 2020 में ये क्वेश्चन था. नाउ साइटोकाइनेस का नेचुरल कौन सा है, J18, J18 N6 डायमाइड, सॉरी N6 डाइमिथाइल अमाइनोप्यूरिन, J18 and N6 dimethyl aminopurine, guanidine and adenine. So these are the natural cytokines. Now synthetic वाले कौन से हैं? Adenine diphenyl, adenine diphenyl urea. This one is a synthetic. Now what is the role of this cytokines? Shoot development and cell division. तो क्वेश्चन ऐसा आया था कि one of the following plant hormone is responsible for the shoot development and cell division. तो आंसर था साइटोकाइन. सो रूट के लिए आता है ऑक्सिन, शूट के लिए आता है साइटोकाइन एंड सेल डिवीजन. देन नेक्स्ट वन इज गिबरलिंस. गिबरलिंस इसमें आता है नेचुरल गिबरलिन ए, गिबरलिक एसिड. दीज आर द नेचुरल वन. देन synthetic one is there is no synthetic derivative of gibberellin. Then what is the role of this gibberellins? Seed germination. तो मतलब सीड को जो जर्मिनेशन, स्प्राउटिंग ऑफ सीड, जो स्प्राउटिंग होता है, मतलब जैसे होतं ना, तर आपण जर चणे भिजत ठेवले सकाळी त्याला मोड येतो, आपण जर मटकी भिजत ठेवली सकाळी त्याला मोड येतो. That is because of the gibberellins. So gibberellins is a plant hormone responsible for the seed germination, sprouting of seed, food, okay, fruit growth, then cell elongation and cell division. So remember उसका function याद रखो. Then next one is abscisic acid. Abscisic acid. So it is known as a, okay, तो याद रखो. So remember these three, one, two, three, ये जो तीन है आपके, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरलिंस, they are known as a growth promoters. All these three are known as a growth promoters. ये ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे. So they are known as a growth promoters of the plant. Growth promoters of the plant. Auxin, cytokinin and gibberellin. Now these two, ethylene and abscisic acid, they are known as the growth inhibitors of the plant. ये पहले तीन जो है ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं, लास्ट के दो जो है आपके ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं. यहाँ इसलिए मैं now abscisic acid, in that naturally you have abscissin 1 and abscissin 2. Okay, synthetic derivative is not there. And remember abscisic acid is known as a growth inhibitor of the plant. It is a growth inhibitor hormone of the plant and it is responsible for the closing of stomata. जो प्लांट का स्टोमेटा होता है वो क्लोज कौन करता है, abscisic acid. So remember the role, very very growth inhibitor and closure of stomata. Now ethylene, ethylene is nothing but the it is a naturally occurring fruit hormone, fruit ripening hormone. तो जो आपका ripening होता है फ्रूट का, that is because of the ethylene. कच्चा बादाम, पक्का बादाम, बादाम कैसे पक जाता है, because of the fruit ripening. जो आपका जो भी फ्रूट है, जैसे एप्पल हो गया या गावा हो गया, गावा मतलब पेरू, पेरू हो गया, या फिर जो भी आपका फ्रूट है, सो दैट फ्रूट इज अ राइपन. आपका जैसे मैंगो हो गया, कच्चा आम, पक्का आम, तो कैसे वो, बिकॉज ऑफ दिस इथिलीन. सो इथिलीन इज अ फ्रूट राइपनिंग हार्मोन. क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुके हैं नागपुर में, बाकी एग्जाम में भी आता है. सो रिमेंबर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड गिबरलिंस, these three are known as a growth promoters and these abscisic acid and ethylene are known as a growth inhibitors. So particularly abscisic acid is responsible for the
inhibition of growth and closure of stomata. इथिलीन इज नोन एज अ फ्रूट राइपनिंग हार्मोन एंड ग्रोथ इनिबिटर। तो ये चार्ट के ऊपर कम से कम क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार। तो इसका सिंथेटिक डेरिवेटिव कौन सा है, नेचुरल कौन सा है, रोल क्या है, जीपैट 2022 में भी क्वेश्चन आ चुका है इसका। स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट, जो आपका प्लांट टिश्यू कल्चर होता है उसमें व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के स्टेप्स कितने होते हैं। तो पहला स्टेप होगा कि एक्सप्लांट। एक्सप्लांट मतलब दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट which you are using to produce a whole plant। जैसे कोई लीफ का पार्ट हो सकता है, कोई स्टीम का पार्ट हो सकता है, कोई फ्रूट का पार्ट हो सकता है, या फिर कोई रूट का पार्ट हो सकता है। so that part of plant which is used to produce whole plant, that is known as a explant। so first step is a of okay first step is a आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट। तो प्लांट में से वो क्या करो, पार्ट निकालो, उसको बोलते हैं। सेकंड स्टेप इज स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट। सेकंड स्टेप इज स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मैं बोल रहा हूँ। सेकंड स्टेप इज स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट। हाउ इट इज डन, इट इज डन बाय यूजिंग सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम पेरोक्साइड एंड मर्क्यूरी क्लोराइड और इथेनॉल। तो स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट के ऊपर क्वेश्चन आता है। वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज नॉट यूज्ड फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट इन द प्लांट टिश्यू कल्चर। उसमें आता है आपका कौन कौन आता है स्टरलाइजेशन के लिए। सोडियम हाइपोक्लोराइड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, सरफेस डिसइंफेक्टेंट, सोडियम पेरोक्साइड इज यूज्ड, मर्क्यूरी क्लोराइड इज यूज्ड एंड इथेनॉल इज यूज्ड। ठीक है, याद रखो। नाउ glasswares they are kept in a hot air oven for 160 or 180 degrees Celsius for sterilization 2 to 4 hours। so sterilization of explant is a very important, याद रखो। थर्ड स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लांट टिश्यू कल्चर। प्रिपरेशन ऑफ सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, जो मीडियम लग रहा है आपको उसके लिए मीडियम बनाना है। ओके, स्टरलाइजेशन ऑफ मीडियम, देन सिलेक्शन ऑफ सुटेबल एक्सप्लांट प्लांट, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट। स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट, ठीक है। पहला स्टेप होता है मीडिया प्रिपरेशन, जो भी कल्चर मीडियम है उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाओ, स्टरलाइज करो। प्लांट का पार्ट ले लो, दैट इज एक्सप्लांट, उसको स्टरलाइज करो। देन वो एक्सप्लांट इज इनोकुलेटेड ऑन द medium। Okay, you have to inoculate that explant in the medium, then you have to add growth promoters and hormones. Now incubate that inoculated explant at this temperature 25 plus minus 2 50 to 60% relative humidity, so plant will start regenerating। Okay? Plant will start growing, now regenerating, hardening and plantlet transfer। ये 6 रीजनरेशन, 7 हार्डनिंग एंड प्लांटलेट ट्रांसफर 8। मतलब जैसे ही वो प्लांट मिल जाता है आपको आपके कोनिकल ब्लास्ट में, तो वो कोनिकल ब्लास्ट से वहां से वो प्लांट निकाल के फिर क्रॉप करना है आपको बाद में। दैट इज नथिंग बट प्लांट टिश्यू कल्चर प्लांट। टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर, क्वेश्चन इसके ऊपर भी एक बार आ चुका है। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर, so explant culture, callus culture, root culture, shoot culture, ovary culture, stamen culture, मेरिस्मेटिक कल्चर, प्रोटोकॉस कल्चर, बहुत सारे कल्चर होते हैं। जो प्लांट का पार्ट लेंगे आप उससे एक कल्चर बनता है, जैसे रूट कल्चर, शूट कल्चर, कैलस कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर, देन ओवरी कल्चर, एंथर कल्चर, पोलन कल्चर, बहुत सारे कल्चर होते हैं। ठीक है, ऑल दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, ओनली वट एवर इज इम्पोर्टेंट हिस्ट्री ओवर। So first one is a explant culture. So parenchymatic cells. Okay, parenchyma is the most versatile tissue and are capable for cell division and growth. So explant culture, culture, culture from plant material. Example, part of plant such as young and healthy pieces of leaves, stems, cotyledon. They are taken for the explant culture. लीप अगर लेगा तो उसको बोलेंगे लीप कल्चर, स्टीम लेंगे तो उसको बोलेंगे स्टीम कल्चर। कॉटिलेडॉन्स मतलब सीड का पार्ट लेंगे तो उसको बोलेंगे सीड कल्चर। नाउ सेकंड वन इज कैलस कल्चर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। कैलस इज नथिंग बट द मास ऑफ लूजली अरेंज्ड thin wall of parenchyma developing from proliferating cells of parent tissue. Naturally, callus can be developed after infection to a plant due to stimulation of hormone like callus can be developed in the laboratory by using तो जैसे नेचुरली प्लांट को कोई इंजरी हो गया तो वहां पे कैलस बनता है। कैलस इज नथिंग बट द लूज मास ऑफ अरेंज्ड थिन वॉल्ड पैरेंकाइमेटिक सेल्स ऑफ द प्लांट। तो लूज सेल डेवलप होते हैं वहां पे पैरेंकाइमेटिक सेल। जैसे आप कोई एक्सप्लांट
आइसोलेट करते हो इवन मीडिया के ऊपर, तो इनिशियली उसका कैलस ही बनता है। तो कैलस मतलब क्या, लूज अरेंजमेंट ऑफ दैट पैरेंकाइमेटिक सेल डेवलपिंग फ्रॉम प्रोलिफरेटिंग सेल्स ऑफ पेरेंट टिश्यू। जो भी टिश्यू आपने यूज किया है, जैसे आपने लिप का एक्सप्लांट यूज किया है, तो वहाँ पे वो पैरेंकाइमेटिक सेल्स वहाँ पे रीजनरेट होंगे और वो मल्टीप्लाई होंगे, वो कैलस मास बनेगा, उसको बोलते हैं कैलस कल्चर। एंड कैलस कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन एंड साइटोकाइनेस। क्वेश्चन इसके ऊपर आया, कैलस कल्चर कैन बी इंड्यूस्ड बाय फॉलोइंग हार्मोन, दैट इज ऑक्सिन एंड साइटोकाइनेस। नाउ रूट कल्चर मींस वहाँ पे रूट का पार्ट लेंगे, एक्सरसाइज रूट कल्चर इन द लिक्विड वे। सेल सस्पेंशन कल्चर मतलब क्या, जो आपका एक्सप्लांट है उसको शेक करो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रांसफरिंग द फ्रैगमेंट्स ऑफ कैलस लिक्विड मीडियम। कैलस कल्चर जो है उसका कुछ फ्रैगमेंट ट्रांसफर करो लिक्विड मीडियम में, उसको शेक करो, देयर विल बी सेल सस्पेंशन कल्चर। अब क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है, मेरिस्मेटिक कल्चर। सो व्हाट इज द मेरिस्टेम कल्चर? मेरिस्टेम कल्चर और मेरिस्मेटिक कल्चर। So मेरिस्टेम कल्चर is nothing but the meristem or shoot culture for micropropagation. So it is used for the production of virus-free plant. याद रखो क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका। So merismatic culture is used for the production of virus-free plant. So in this apical meristem, that is apical meristem मतलब क्या? A region of shoot apex lying distal to the leaves of perimordium. That is known as apical species. मतलब क्या, जहाँ पे लीफ आ रहा है, नया लीफ आ रहा है, उसके लीफ के वहां पे छोटा सा एकदम बारीक लीफ भी आता है, तो उसको बोलते हैं मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम। So in case of merismatic culture, apical meristem is used as a region of shoot apex lying distal to the leaf that is used, and the technique is used for the production of virus-free plant. Question इसके ऊपर आ चुका है। Then protoplast culture. Protoplast means what? Cell without cell wall is known as a protoplast. Protoplast means what? Cell without cell wall, known as a protoplast. So culture of protoplast cell without cell wall. The cell wall of cell is removed by using different technique. So cell wall of cell is removed by using either mechanically or by using enzymatic. So lastly, these are used to make a fusion two different cells. मान लीजिए कि आपका पोटैटो प्लांट का सेल है और एक टोमेटो प्लांट का सेल है, तो उनका सेल वॉल निकाल दो by using enzymatic treatment, and whatever remain is known as a protoplast. Now these two protoplasts, they are mixed together, and some third agent known as a fusionogen, that is a glycol, they are added, like polyethylene glycol, they are added, so that this tomato protoplast and potato protoplast, they will become fused to each other, and you will get a new cell, that is known as a new cell, hybrid cell, and from that cell you can develop plant, and on that plant एक साइड पे टमाटर भी आएंगे, एक साइड पे पोटैटो भी आएंगे. So lastly, cell without cell wall is known as a protoplast, and you can remove the cell wall of cell by using enzymatic hydrolysis or by using mechanically. Now these protoplasts, they are allowed to fuse in the medium by using fusionogen. Most commonly used fusionogen is a polyethylene glycol. Question आ चुका है. Most commonly used fusionogen to fuse the two protoplasts of plant, polyethylene glycol and sodium nitrate. Tomatoes is a kind of plant. Here you can get potato as well as tomato on the same plant. एक ही प्लांट पे आपको टमाटर भी मिल जाएंगे, एक ही प्लांट पे आपको आलू भी मिल जाएंगे. Tomatoes means tomato plus potato. Applications of plant tissue culture. First one is nothing but the improvement of hybrids. तो पहले ज़माने में राइस क्या है, पहले ज़माने का जो राइस था उसमें बहुत ही जो क्रॉप यील्ड है, जो फाइनल यील्ड मिलता है आपको क्रॉप का, तो वो कम मिलता है पर हेक्टर. यील्ड कितना है, मान लीजिए कि पर हेक्टर आपको सिर्फ 2 क्विंटल्स ऑफ राइस मिल रहा है पर हेक्टर. नाउ इम्प्रूव ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट राइस प्लांट, तो वो जहाँ पे 2 क्विंटल मिल रहा था आपको पर हेक्टर, यहाँ पे अभी 10 क्विंटल मिल रहा है, 10 क्विंटल्स ऑफ राइस पर हेक्टर, टू इम्प्रूव द yield of crop, improvement of hybrids, okay? Rice and wheat. Production of encapsulated cells, covering of endosperm of cell with the gel to protect the seeds, germ plasm. Production of disease resistance plant, for example BT cotton.
पहले क्या होता था कि जो नॉर्मल कॉटन थी, कॉटन का सीड लगा दिया, कॉटन का प्लांट रेज हो गया, उसमें कैप्सूल्स बनने लगी कॉटन का, उसको बोलते हैं दोड़े, कैप्सूल्स बनने लगी है, उसमें कॉटन आ जाता है। बट जैसे ही कैप्सूल बनता है तो उसमें एक पेस्ट आता है, बोल गार्ड नाम का एक ये आता है पेस्ट, बोल गार्ड आळी म्हणतात त्याला. ती काय करते, ती आळी पूर्ण जे काय कॉटनचा कापूस असतो, बोंड असतं, बोंड कॉटन त्या पूर्ण त्या बोंडाला खाऊन घेते. सो दॅट कॅप्सूल इज टोटली eaten by that ball guard. Now that to prevent this, so using plant tissue culture, they introduce one gene in the cotton known as a Bacillus thuringiensis gene. That is known as a BT. BT मतलब क्या है? Bacillus thuringiensis. B for Bacillus, T for thuringiensis. Bacillus thuringiensis gene responsible for the production of one toxin. तो वो ये जीन क्या करेगा, प्लांट में टॉक्सिन बनाएगा, बेसिलस थ्यूरिजिनेस. उसको आजकल अपन बोलते हैं बीटी कॉटन. बीटी कॉटन, बीटी मतलब क्या है, बी मतलब बेसिलस, टी मतलब थ्यूरिजिनेस. नाउ दिस जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्लांट एंड नाउ दिस प्लांट इज प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन. अगर वो बोलगार्ड आता है खाने को, वो कैप्सूल, तो वो बोलगार्ड खाते ही वो बोलगार्ड ही मर जाता है, बिकॉज टॉक्सिन प्रोडक्शन इन द प्लांट. बीटी मतलब क्या, बेसिलस थ्यूरिजिनेसिस. That gene responsible for the production of toxin is isolated or it is a transferred into cotton plant. Okay, and आजकल जो सीड्स ही मिल रहे, जो सीड मिल रहे, वो सीड ही बीटी कॉटन है, मतलब उसमें वो जीन रहता है ऑलरेडी. तो बोलगार्ड अड़ी जो है वो आपकी कॉटन क्रॉप को खराब नहीं कर सकते, ऐसा मानना है. लेकिन आजकल बोलगार्ड भी बहुत शाने हो गए. वो बोलगार्ड वो दे बिकम रेजिस्टेंट टू दिस बीटी कॉटन, तो उसको भी रेजिस्टेंस आ गया. जैसे होता है ना, एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस आ जाता है माइक्रोबियल सेल को, वैसे ये बीटी बीटी जीन का भी रेजिस्टेंस आ गया है. इसको बोलगार्ड जो पेस्ट है उसको, बोलगार्ड ने भी खुद को अलग से डेवलप किया कि चलो होने दो, आप टॉक्सिन प्रोडक्शन करते हो ना, तो वो टॉक्सिन को मेरा कुछ बाल विभाग नहीं कर सकता. सो दैट इज अ बीटी कॉटन. नाइपर में क्वेश्चन आता है इसके प्रोडक्शन ऑफ फाइरिस्ट्री प्लांट, दैट इज अ मेरिस्टेम कल्चर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन. देन प्रोडक्शन ऑफ stress resistance plant, transfer of gene in eukaryotic various physiologically active alkaloids and glycosides are they are produced by this stress resistance plant. ज़्यादा अगर सूखा पड़ गया है और ज़्यादा बारिश हो गई तो उसमें क्या है, पूरा क्रॉप खराब हो जाता है. सो स्ट्रेस रेजिस्टेंस प्लांट बनाए, so they can raise the excessive that excessive raining or excessive सूखा हो गया बोलते हैं. So stress resistance plant, they can tolerate excessive water, excessive raining and excessive drought. Drought मतलब सूखा. They can resist a drought as well as excessive raining, heavy raining. Transgenic animals and transgenic plant. क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है. सो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल कौन सा था, डॉली शीप. डॉली शीप आपको 11th-12th में भी हो गया होगा, आजकल जो नया सिलेबस है उसमें है. तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल, इट इज अ हाइब्रिड फ्रॉम व्हाइट शीप एंड ब्लैक. देन गोल्डन राइस, यहाँ पर मैं क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है गोल्डन राइस, ए राइस विथ इंक्रीज्ड विटामिन ए कंटेंट. तो पहले क्या था, विटामिन ए का जो कंटेंट है राइस में, तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया कि ये राइस में तो विटामिन है ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, पोवर्टी आ रही. दे डेवलप बाय गोल्डन राइस. गोल्डन राइस मतलब ये थोड़ा सा येलो कलर का होता है, ड्यू टू इंक्रीज द कंटेंट ऑफ विटामिन ए इन दैट राइस, येलो कलर ऑफ राइस, प्रो विटामिन ए, तो इसमें प्रो विटामिन ए रहेगा. देन बीटी कॉटन, insect resistance to the cotton crop improvement. Then edible vaccine, different antibody coding genes, they are transferred into various vegetables. तो आप टमाटर जो खा रहे हो उसमें अगर जीन है कोई एडिबल वैक्सीन का, मतलब जैसे कोरोना वैक्सीन के लिए जो वैक्सीन बना है, जो जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, तो कोरोना का वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं, टमाटे खाओ कोरोना वैक्सीन, कोरोना के रेजिस्टेंस पाओ. सो दैट इज एडिबल वैक्सीन. if any antigenic protein is encoded into the vegetables, जैसे आप बटाटे खाते हो, पोटैटो, आलू खाते हो, तो आलू में अगर ऐसा कोई जीन है जिसमें आपको वो खाने के बाद में एक पर्टिकुलर डिसीज को एंटीबॉडीज बनेगी, तो दैट डिसीज विल नॉट कम टू यू. जैसे होता है जैसे मलेरिया, तो मलेरिया कॉमन होता है रीजन, डेंगू कॉमन होता है, तो मलेरिया का एंटीजन या फिर डेंगू एंटीजन अगर आपने प्लांट में ही डाल दिया, जैसे
टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, भिंडी हो गया, ओकरा, देन लेडी फिंगर, ओकरा, लेडी फिंगर, जो भी आप वेजिटेबल खाते हैं उसमें अगर वो जीन ऑलरेडी है, so that will whenever you will eat these vegetables, there is a development of antibodies. ठीक है, मतलब नेचुरली वैक्सीनेशन आपको हो जाएगा, नेचुरली वैक्सीनेशन, तो आपको अलग से वैक्सीन लेने की जरूरत है, दैट इज एडिबल वैक्सीन। तो एडिबल वैक्सीन के ऊपर आप अलग से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। So this was regarding the